ये उतारा सबने Yes, sir. ये लिखा है ये कार्डर बेस्ड इधर Sir? ये लिखा है इधर कार्डर Yes, बेस्ड sir. So we are going to start a new topic, that's for social justice and empowerment. Social justice and empowerment. बहुत ही brief topic है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, but it's a very important topic. ठीक है? बहुत ही ज़्यादा important topic है, because India has been created on a scheme that is known as welfareism. India is a welfaric state. ठीक है? You being civil servants will be oriented towards welfareism. लोगों का welfare. And you should know what are those areas where the welfare is required. सबसे पहली बात. और उस एरिया में वेलफेयर हमें चाहिए ही क्यों? अगर पॉवर्टी है, अगर हंगर है, तो ऐसा क्यों है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? आई बात समझ? व्हाट गवर्नमेंट हैज डन एंड व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट वी कैन डू फर्दर इन ऑर्डर टू टैकल दोज इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस. ठीक है? द कंसेप्ट इज सोशल जस्टिस and empowerment. It means you have to empower the already marginalized section. ठीक है? The marginalized section of the society, that is poor. ठीक है? Yes. That's woman. That's disabled. Very well. Children, transgender, people of old age. These are the broad categories of marginalized section in the society, which needs upliftment from the state. ठीक है? Which needs upliftment from the state, as well as there should be change of mind. State should do progress in change of mind while dealing with these issues. ठीक है? इनके issues से one on one हम इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन not like poor, woman, disabled, under broad categories. Poverty, उसमें देखेंगे इस सब का क्या हिस्सा है. हंगर, उसमें सबका देखेंगे. एजुकेशन, उसमें सबका देखेंगे. हेल्थ, उसमें सबका देखेंगे. ठीक है? We will see under broad categories what we are going to do with the poor people, what we are going to do with the women, what we have done, what are the gray areas remaining जहाँ कुछ और करना है. ठीक है? You have to empower the already impoverished people. वो ये है. ठीक है? In our country. And this whole paper is about their empowerment. And the paper is social justice and empowerment. Deals with your general studies paper 2 and general studies paper 1, जहाँ पे आपकी सोसाइटी है. सोसाइटी का कुछ पार्ट इधर से आएगा और मेजॉरिटी का पार्ट इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 2. पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहाँ पे, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे भी लगता है. ठीक है? It is useful यहाँ पे भी वहाँ पे, and it's useful when you are writing essays on social issues. ठीक है? Social issues पे अगर कोई essay आता है आपको, essay is your one of the most important paper of this examination, तो उसमें क्या होगा? उस समय यहाँ का concept will play a vital role. Geography का concept, economy का concept, polity का concept इतना important role play नहीं करेगा जितना ये role play करेगा वहाँ पे. If the essay is based on this theme, किसी welfaric theme में या ऐसा, this paper will prove very much handy at that time. essay में. ठीक है? And this is very much important and relevant
with respect to your examination also. जिस ये आप पढ़ रहे हो, you are going to become a civil servant. और उसके लिए you need to know what are the lacunas in our society, how to address those lacunas. आपको वही काम नहीं करना है जो पिछले 5 साल से हो रहा है. अगर कुछ होता उस काम से तो आज वो लेक्यूना नहीं होता. You have to develop something new, see something innovative, कुछ करने के लिए. ठीक है, इसका मतलब ये है, पहले तो आपको लेक्यूना पता होना चाहिए और ये क्यों है और गवर्नमेंट ने क्या किया इसके रिलेटेड, एंड व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू, how we are going to help the poor people, how we are going to help them in education sector, in health sector. ठीक है, और हम इनको कैसे हेल्प इंडिपेंडेंट बनाएंगे. स्टेट का ये वेलफेयरिज्म हम इनको ऐसा ट्रेन करेंगे, हम इनको ऐसी सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करेंगे जिससे ये इंडिपेंडेंट बन जाए. इनकी आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन को ये वेलफेयर एक मेजर जरूरत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज द रियल कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट का ये मतलब नहीं है कि हमेशा कंटिन्यू इटर्निटी तक स्टेट इज प्रोवाइडिंग. नो, स्टेट इज क्रिएटिंग द सर्कमस्टेंसेस जिसमें ये इंडिपेंडेंट बन जाए. वंस दे आर इंडिपेंडेंट दे विल डू जो इनको पसंद है, ऑब्वियसली विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, so we have the first topic with respect to your social justice and empowerment that we have to deal, and a very important topic, that is poverty. गरीबी, poverty. ठीक है, poverty. Write like this, you make a flow chart like this. Concept of poverty. इस poverty में हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है? Under the poverty section, what we are going to study? We are going to study concept of poverty. Second, manifestations of poverty. How poverty manifests itself. It is not always low income means poverty. ठीक है? There are multiple other factors through which poverty can manifest itself. ठीक है? Third, approach to understand poverty. What approach would we should follow to understand what the poverty? After that, we will see the major indexes or indices which are related to poverty. ठीक है? For example, you have Human Development Index. You have Multipurpose Poverty Index. You have Socio-Economic Caste Census. ठीक है? Human Development Index, Multipurpose Poverty Index and Socio-Economic Caste Census. और इसमें you add यहाँ और भी MDG and SDG. Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals. What are these goals with respect to what? Poverty. ठीक है? ये लिखा है यहाँ तक? हाँ, तो ऐड करते जाओ अगर जगह है यहाँ से कंटिन्यूटी में, अगर नहीं है मतलब यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आओ. ठीक है? Causes of poverty. Implications of poverty. Are you getting my point? And the last topic is in this section is government efforts.
गवर्नमेंट एफर्ट्स, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, इस सब चीज के लिए व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स, प्लस उन एफर्ट्स में क्या लैक्यूनाज है। अगर एफर्ट्स है, किए है गवर्नमेंट ने, तो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब समथिंग इज लैकिंग। तो वो लैकिंग चीज क्या है, व्हाट आर दोज लैक्यूनाज, एंड अगर वो लैकिंग है उसको एड्रेस कैसे करेंगे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। Nothing beyond this table will come under this section of poverty, be it mains, be it prelims, or if you are asked something about poverty in your interview as well. Okay? This is a holistic approach towards the study of poverty. You have the concept of poverty, you have the manifestations of poverty, you have approach to understand poverty, you have multiple indexes that define you what poverty actually means. ठीक है, human development index, socio-economic class census, sustainable development goals. You have what are the causes of poverty, if there is now poverty, what are the implications of poverty, and what government efforts are there in order to reduce everything. ठीक है, what are the lacunas in the government efforts and what is the possible way forward. This is with respect to poverty, which we are going to study. Concept of poverty. ये लिखा सबने? Concept of poverty. ठीक है? Poverty is such a subject or such a topic, sorry, जिसकी कोई एक definition नहीं है. Poverty can be understood through multiple definitions. Multiple scholars, multiple people give these definitions of poverty. Poverty in Dubai is different from poverty in India. ठीक है? The definitions are different. वहाँ if you have Fortuner, you are poor. नहीं बात समझ में? You need to have high-end cars. For example, मेरी example में definition over there of poverty यहाँ different है. यहाँ की definition is different with respect to Sudan, Yemen, that are going through crisis nowadays. बता रही है समझ? The definition changed. Now what we should do as students, we just have to see this concept as students, and we will see this concept through the prism of any intellectual. अब हर एक definition we won't cram or we won't remember. We will see what an intellectual person has said, और कोई उसके बगैर भी कोई एक basic definition that's it. ठीक है? In the context of India, we have one of the most intellectual person, the Nobel Prize winner, Amartya Sen. He has defined poverty. He has said poverty is the deprivation of basic capabilities of life rather than lowness of income. What is considered with respect to poverty, खाली पहले जो कंसेप्ट था, इट्स लोनेस ऑफ इनकम. जिसके पास पैसे नहीं है वो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है वो गरीब है. बट अमर्त्य सेन इज सेइंग नो, दिस इज नॉट द केस. दिस इज द deprivation of basic capabilities of life which you enjoy as the citizen and have your right as basic capabilities. If there is deprivation of those capabilities, you are poor. You are poor. For example, if you are a multimillionaire but you are being discriminated in the social sphere based on your caste, you are poor. You are poor. You might be holding a highest constitutional office, still you can be discriminated on the basis of caste. You are poor. For example, the former president of India, ठीक है, Ramnath Kovind, he was
racist slurs were used against him, and when he tried to enter a temple. He is the president of India, first citizen of the country, highest constitutional office, having income, everything, 5 lakh rupees ki salary, Rashtrapati Bhavan. Still, under this definition, if he has been deprived to go inside the temple based on his caste, he is poor. You are not allowed to sit in the school based on your caste. You are poor. It's not only roti kabla makan. It was there, pehle. Now the things have changed. It is the basic capabilities of life. If you are a citizen of India, you are not able to participate in the political process of the country. You are not able to exercise your vote. The element of poverty is in you. Okay? It is not merely lowness of income. एक थोड़ी 2 लाइनें लिखो इसमें पहले. ये लिखी है डेफिनेशन अमर्त्य सेन की. इसको लिखो. लिखा? You write. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अब हम एक जनरल डेफिनेशन देंगे. ये मिस्टर अमर्त्य सेन सेड दिस. We will write a general definition of poverty now. ठीक है? That is more or less universally acceptable. If there is an essay on poverty, I guarantee you, you will catch the heart and mind of examiner with this quote on the very first line of your essay. If there is essay on poverty, start with this. इन्वर्टेड कॉमर्स में ये लिखा, अमर्त्य सेन लिखा, उसके नीचे आप वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो. ये सबसे ऊपर पेज में होना चाहिए. You write, poverty is a social condition. Is a social condition that is characterized by lack of resources. That is characterized by lack of resources necessary for basic survival. Necessary for basic survival, or necessary to meet a certain minimum level of living standard, or necessary to meet a certain minimum level of living standard. Full stop. Poverty is not only a condition of economic insufficiency. Poverty, read what you are writing, okay? Poverty is not only a condition of economic insufficiency. Okay? Rather, it's also social and political exclusion. It's also social and political exclusion. Are you getting this point? ठीक है? Last point क्या है हमारा? Poverty is not only the condition of economic insufficiency. खाली तक known as poverty किया? That's not poverty. It is added or it is strengthened by 2 more factors. That is, it is the social or political field. If you are excluded, that is also poverty, even if you are economically sufficient. समझ रही है बात? You give the heading manifestation of poverty. Manifestation of poverty. Manifestations of poverty.
This was the definition, universal concept, and the concept of poverty given as by regarding Indian standards. ठीक है, by Amartya Sen. Now we will see manifestation. Poverty कहाँ कहाँ पे खुद को manifest करती है, कहाँ कहाँ पे आपको लगेगा कि that individual and or the household or the community is poor. Manifestation कहाँ कहाँ पे ये बाहर आती है, ठीक है. Poverty manifests itself with respect to economic sphere. Obviously, ठीक है. Poverty manifests itself with respect to social sphere. Poverty manifests itself with respect to political sphere. Poverty manifests itself with respect to cultural sphere. If you are deprived of any of those rights which are provided to you under the headings of economic, social, political or cultural sphere, या तो rights या तो आप जो achieve करना चाहते हो minimum survival के लिए, इन सब में वो आपके पास available नहीं है. कोई एक भी इसमें आपके पास lacking है, या किसी एक sphere का कोई एक point, you come under the definition of poverty. ठीक है. For example, what is economic? Economic sphere है, देखो मैं बताता हूँ. You have a right to work of your own choice. Right to vocation, a fundamental right under Article 19. ठीक है. There should be right to equal wages or pay. एक होता है पैसे कम होना. हम आपको राइट टू वर्क भी दे रहे हैं, आई बात समझ. हम आपको, मर्द है या औरत है, हम आपको इक्वल वेजेस भी दे रहे हैं. उसके बाद दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज सेट बाय द गवर्नमेंट कि इसके नीचे जो है वो पुअर है. आपको ये सब कुछ दिया हमने. यू आर हियर स्लाइटली अबव द मिनिमम स्टैंडर्ड. यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर. You have money above the minimum standard. You are falling here. Money है, पैसा है. But I am not allowing you the right to work. किसी दूसरे फील्ड में ही मैं आपको रख रहा हूं, आपकी पसंद का काम करने नहीं देता. Though that field has more money, you are above the definition of poverty as per government, but you are not free to do whatever you want. ठीक है. Denying of right to work. I am an executive in a company. You are an executive in the company. You are in the office from 9 to 5. Maybe 9 to 5. Same work, same workload, everything. Your salary is 40. My salary is 60. दोनों definition of poverty के ऊपर आ रहे हैं. हमारे पास उतने मिनिमम स्टैंडर्ड, वो कैलोरीज दिन में इनटेक लेना, वो आगे देखेंगे. कैलोरीज कितनी होनी चाहिए या पैसे कितने होने चाहिए अबव पॉवर्टी लाइन, वो दोनों हम फुलफिल कर रहे हैं. बट यू आर लैकिंग ए स्पेसिफाइड टेनेंट ऑफ योर राइट टू इक्वल वेजेस. वो आपको नहीं है. ठीक है. डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज एम्पावर्ड. You are above poverty line as no. You should have every basic minimum facility that's provided to me. सेम काम के लिए सेम पोजीशन पे आपको भी मिलनी चाहिए. ठीक है. ऐसी ही चीजों के लिए ये पूरा सेक्शन बना है, तो एम्पावर, क्योंकि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स है. अगर वहां पे आपने प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की तो पॉवर्टी के डेफिनेशन में यू आर लायबल टू फिट देयर. ठीक है. With respect to social sphere, what can be? देखो सोशल में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ किस चीज का?
health related factors. Accessibility, affordability and availability of health related factor. नहीं है तो poor हो. समझ आ रही है बात? नहीं है तो पुअर हो. आपको राइट टू एजुकेशन क्यों दिया हमने? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए. स्टेट इज वर्किंग. डीपीएसपी में जो प्रोविजन जो स्टेट को कहे गए हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, जब आपके पास रिसोर्सेज हो उनको करो इंप्लीमेंट. एंड स्टेट इज डूइंग इट्स जॉब. ग्रेजुअली हो रहा है. डीपीएसपी से निकाल के फंडामेंटल राइट्स में डाल रहे हैं. हो रहा है. इफ यू आर नॉट हैविंग एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ, यू आर व्हाट? Poor. In the field of education, you are poor. In the field of sanitation, you are poor. In the field of social respect, you are poor. ठीक है? आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन लोग देख के ही लाइफ आप चेंज करते हैं. नॉट आपने कोई क्राइम किया, यू आर ए क्रिमिनल बिकॉज ऑफ इनहेरेंट कलर, because of your caste, because of your race, because of your community. And इसी चीज को find out करके you have to empower it. That is the crux of this subject, social justice and empowerment. ठीक है? With respect to political, if you are not given right to vote, ठीक है? You don't have freedom of thought, freedom of expression, freedom to form association. Are you getting my point? This is political dimension में poverty. It's not merely lowness of income. If there comes question in your examination, poverty is considered as lowness of income. Critically examine the statement. You have to say no, ऐसा नहीं है. Lowness of income is one of the factors, but there are multiple other factors also. ठीक है? Cultural में क्या है? If you are not able to preserve your own culture, you are poor. For example, Farhan, Kangri, ठीक है? This is the part and parcel of Kashmiri culture. Wazwan, cuisine, part and parcel of Kashmiri culture. If you are not being able to exercise your culture, आपको रोका जा रहा है खुद के कल्चर में रहने से, फैरन पहनने से, वाजवान को बनाने से या किसी और चीज को. In Kashmiri aspect, I am saying, you are poor. It's not only this lowness of income. You must have the right to preserve your culture, right to preserve your political rights, social upliftment, as well as economic things should be equal. उसमें फिर आप poor नहीं हो. हाँ, फिर एक ही क्राइटेरिया रहेगा, ये सब देने के बाद above poverty line and below poverty line, वो इनकम पे खाली फिर डिसाइड होगा. एक होता है इनबिल्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ पॉवर्टी. ये आपने ये इक्वली सबको प्रोवाइड किया. अब किसी को इसके बाद भी कमाना नहीं आता, किसी की इनकम लो है, अब उसको हम वेलफेयर मेजर में डालेंगे, जनधन योजना, कोई भी योजना. ठीक है? लेकिन जो मेन कॉज है, क्योंकि आपने उसको जनधन योजना से पैसे प्रोवाइड किए, टिम्स से पहुंच की, उसके पास पैसा नहीं है, within 5 years 10 years he will be independent, he will be. बात समझ आ रही है? ये सब कुछ इक्वली पहले देना है. एम्पावरमेंट इज नॉट गिविंग मनी. एम्पावरमेंट इज क्रिएटिंग द सिचुएशन वेयर व्हेन यू विल प्रोवाइड असिस्टेंस, आफ्टर दैट ही विल बिकम इंडिपेंडेंट. वन टाइम असिस्टेंस. अब जिंदगी भर बैठ के खिलाना पिलाना है, उसको एम्पावरमेंट नहीं कहेंगे. If you are outside the vicious cycle here, इसके बाहर स्टेट इज डूइंग एवरीथिंग, लोगों के दिमाग में भी आ रहा है नहीं, we should go beyond the caste line, race line, religion line, ये सब कुछ फैक्टर कंट्रोल में है, फिर खाली हमें इकोनॉमिक लेवल पे पॉवर्टी दिखेगी. हेल्प देम, दे विल बी आउट ऑफ पॉवर्टी. समझ आ रही है बात? यू राइट ऐसे इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, ऐसे ही लिखो, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वल वेज, इधर लिखो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे. जस्ट इट इज ए चार्ट. व्हाई? अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन में टाइम थोड़ा कम हो, ठीक है, यू कैन मेक दिस चार्ट. दो चीजों में चार्ट हमेशा बनाना चाहिए. एक तो रिक्वायर्ड, जरूरी है, ठीक है, अननेसेसरली यू डोंट मेक.
अगर जरूरी है, इफ यू हैव लेस टाइम देन ओनली मेक चार्ट. अगर टाइम ज्यादा है तो डेफिनेटली बनाओ और उसको एक्सप्लेन भी करो. पॉलिटिकल में लिखना फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड एसोसिएशन. Past. लिखा पॉलिटिकल में क्या लिखा? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन. कल्चरल में लिखो एबिलिटी टू प्रिजर्व योर कल्चरल यूनिकनेस. एबिलिटी टू प्रिजर्व योर कल्चरल यूनिकनेस and assertion of identity. Ability to preserve your cultural uniqueness and assertion of identity. If you are denied this, you are poor. ठीक है? You write now paragraph में अब इसको explain करेंगे हम इस सारी चीजों को. You write anything mentioned above. Anything mentioned above. Anything mentioned above, if denied. Anything mentioned above, if denied, is deemed to be a situation of poverty. Is deemed to be a situation of poverty. As poverty is a multidimensional concept. As poverty is a multidimensional concept. As poverty is a multidimensional concept. If you are having a question, UPSC में, poverty is a multidimensional concept. Explain. Yeah. लिखना आएगा. Poverty पहले you will start with the Amartya code. It is not based on income only. It has multiple issues, multiple facets. ठीक है? Then you will explain ये सब चीजें हैं इसकी. फिर last में you will conclude all these things are multidimensional things and everything should be kept in mind. Therefore, poverty is a multidimensional concept. ठीक है? This is a means-oriented subject. So think of this subject in a descriptive manner. Objective format में नहीं. ठीक है? क्योंकि ये prelims में नहीं पूछता है. ये वाला subject. Full stop. Poverty in broadest sense. Poverty in broadest sense does not only refer to survival. Does not only refer to survival, but contribution and participation in social life. But contribution and participation in social life. But contribution and participation in social life. Social life के important events हैं, marriage, ठीक है? Rituals, religious rituals. You are not being allowed to enter inside masjid or temple or church or a gurudwara. You are denied of your right of participation in social life. You are poor. You come under the manifestation of poverty. ठीक है? लिखो इसमें. Full stop. Next slide. Poverty has confronted
poverty has confronted human civilization since ages. Poverty has confronted human civilization since ages. अगर तब की और अब की पॉवर्टी में फर्क है, ठीक है? Ancient times, what was the need? Food, shelter, cloth. ठीक है? The only requirement, the only need. There were no McD's, no KFC's, nothing like that. No supercars, कुछ नहीं. ये था requirement. There was technological advancement. ठीक है? Technological advancement. There was development and growth. और मॉडर्न एरा में हम पहुंचे, ठीक है? अब हम मॉडर्न एरा में पहुंचे. द डिमांड्स हियर increased with respect to basic necessity. आज मोबाइल फोन भी बेसिक नेसेसिटी मानी जाती है, ठीक है? तब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था. एक चीज है, इफ एनीवन एट एंशिएंट टाइम में, if anyone was deprived of food, was deprived of shelter, was deprived of clothes, it was not human induced. इस बात को समझो, क्योंकि लैंड वॉज नेवर अ कमोडिटी. कमोडिफिकेशन ऑफ लैंड रिसेंटली हुआ है. लैंड वॉज नेवर अ कमोडिटी. पॉलिटिकल क्लास वॉज मोर और लेस एब्सेंट. अगर होती भी तो उसका और प्रजा का दूर दूर तक कोई आपस में वो बॉन्डिंग नहीं होती थी, ठीक है? What if they were deprived of food, they were deprived of shelter, they were deprived of clothes? This was due to natural circumstances, flood, drought, ठीक है, famine, ऐसा कुछ, वो सब के लिए एक जैसा था. With respect to modern things, यहाँ पे human induced poverty है. Why? रोटी कपड़ा मकान सबके पास है. अभी ये जो पैरामीटर्स देखे, you are not being allowed inside masjid, inside temple, inside gurdwara. You are not being allowed because of a specific race you belong to attend marriage ceremonies. You are not being allowed to preserve your culture. ठीक है? ये कुछ अलग चीज की पॉवर्टी है, ये कुछ अलग चीज की पॉवर्टी है. Here ancient times में पॉवर्टी was natural और सबके लिए एक जैसी थी. कोई कुछ नहीं कर सकता था. फेमाइन आया तो सबके लिए एक जैसा. यहां पे आज अगर फेमाइन आएगा, जो सबसिस्टेंस लिविंग है, हैंड टू माउथ, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं. कोविड-19 जो सुबह कमा के शाम को खाते थे, दे सफर्ड, दे डाइड, ठीक है? जो इसमें अपलिफ्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, जिसके पास पैसा था, जो ऑलरेडी बचा के रख सकता था अपने लिए लाइवलीहुड के रिसोर्सेज, उन्होंने टैकल कर लिया कोविड-19. समझ में आ रही है बात? तो ये डिफरेंस पैदा ही क्यों हुई? ये कहां से आई डिफरेंस? ये तो थी ही नहीं यहाँ. ये यहाँ पे किसी के पास नहीं होता तो किसी के पास नहीं होता, सबके पास होता तो सबके पास होता. यहाँ पे डिफरेंस कैसे? मेरे पास कैसे है, आपके पास नहीं है? बिकॉज देयर आर सम पैरामीटर्स जहां पे आपको मार्जिनलाइज रखा गया है और आप यहीं पे रह गए और कोई लोग आगे चले गए. यू हैव टू टारगेट दोज पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू वाइप आउट पॉवर्टी इन रियल सेंस. ना कि स्कीम्स दे दे के, लोन माफ करके, उससे कुछ नहीं होगा. समझ आ रही है बात? यू राइट? लिखने से ज्यादा समझ आएगा. Poverty has confronted human culture and civilization since ages. Full stop. In the beginning, humans were dependent on nature. Humans were dependent on nature. In the beginning, humans were dependent on nature for their basic survival. For their basic survival. Hence the state of poverty was general. Hence the state of poverty was general. समझ आ रहे हैं? Hence the state of poverty was general.
Full stop. Next paragraph. However, with progress in social organization, and technological development, the dependence on nature declined. This is because the benefits of socio-economic progress इस ancient stage से modern stage में आए ना, there was development, technological advancement, socio-economic progress, ठीक है, ये हुआ. The benefits of socio-economic progress has not been equally shared by all. Has not been equally shared by all. This has resulted into polarization of society. मतलब different poles बन गए, अमीरी गरीबी के caste basis पे of society. And hence in current scenario, read what you are writing. Poverty is a socially created state. समझो इस term को. Poverty is a socially created state. Poverty वो state है human beings की that is in current scenario has been created socially. Poverty is a socially created state. You write a question. This was asked in UPSC 2020. ये हम करेंगे क्लास में, ये पढ़ेंगे हम. Impact इसका. You write COVID-19 pandemic accelerated class irregularities. COVID-19 pandemic accelerated. इसका मतलब क्लास इरेगुलरिटी पहले से ही थी. समझो पहले क्वेश्चन को. पहले से ही थी और बढ़ रही थी. इसको एक्सेलरेट किया किसने? कोविड-19 के पैंडेमिक ने. कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया. इसने इसको एक्सेलरेट किया. कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास inequalities and poverty in India. Full stop. Comment. You have to comment on this statement. We will see COVID-19 का impact क्या रहा हिंदुस्तान में and how the government was able to deal with that. कल परसों जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है. You write another question based on poverty. देखो ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एक पूरा सब्जेक्ट, एक पूरा टॉपिक है. उसका टॉपिक है पॉवर्टी. 2020 में इस पे 2 क्वेश्चन आए थे पॉवर्टी पे ही. ये पहला था. दूसरा लिखो पॉवर्टी 2020 का यूपीएससी. The incidence and intensity of poverty. The incidence and intensity. Incidents हो गए यही जो हमने अभी लिखे, इकोनॉमिक सोशल. इन्सिडेंसेस कहाँ पे होता है, and intensity कितनी होती है. क्वेश्चन को समझो. The incidences and intensity of poverty are more important. क्वेश्चन समझना बहुत इजी है, सॉरी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको इजी बनाओ. The incidences and intensity of poverty are more important in determining poverty. Based on income alone. Full stop. Based on income alone.
रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट, इसको देखो ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, द इंसिडेंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी क्या आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी रादर देन इनकम फैक्टर। जो हमने अभी पढ़ा, इंसिडेंसेस, इकोनॉमिक इंसिडेंट्स, सोशल इंसिडेंट्स, पॉलिटिकल इंसिडेंट्स, कल्चरल इंसिडेंट्स एंड देयर इंटेंसिटी किस लेवल की हो रही है, इज मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी, हाँ, रादर देन इनकम। सच है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, फुल स्टॉप। अभी हम आधे घंटे से ही पढ़ रहे हैं इस पॉवर्टी को, अभी इसमें बहुत कुछ है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यही यूपीएससी पूछता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद पूछता है कुछ और, यू राइट इसी क्वेश्चन में फुल स्टॉप। इन दिस कंटेक्स्ट, इसी कंटेक्स्ट को मद्देनजर रख के जो आपने लिखा, इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट United Nations multidimensional poverty index report. Multidimensional poverty index report. In this context, analyze the United Nations multidimensional poverty index report, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्सेस में, जिसका हमने पहले ही नाम लिखा। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस रिपोर्ट को जब वो प्रेजेंट करता है दुनिया के सामने, यूएनडीपी, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स फॉर योर सेक्शन। अभी हम पढ़ेंगे इस रिपोर्ट की जनरल टर्म्स क्या है, इसको कौन पब्लिश करता है, इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, किस चीज को यूज करते हैं। नीति आयोग ने इंडिया के लेवल पे कुछ ऐसी ही रिपोर्ट बनाई है, उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स यूज किए हैं, वो जनरल हम पढ़ेंगे। फिर जब पर्टिकुलर रिपोर्ट आती है, उसके की पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी, वो एज अ करंट अफेयर यू हैव टू ऐड हियर। बात आ रही है समझ? अब आएगी फॉर एग्जांपल इस साल यूएनडीपी से योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, यू हैव टू सी दैट रिपोर्ट, यू हैव टू टेक द की पॉइंट्स आउट ऑफ दैट रिपोर्ट एंड यू हैव टू ऐड हियर। कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, कुछ भी नहीं। इट इज होली एंड सोली अंडरस्टैंडिंग इशू ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो आपको समझ आ गया। सेकंड पार्ट है कि आपने उस साल करंट अफेयर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब आप बोलोगे सर इतने सारे रिपोर्ट्स है, हम क्या सब पढ़ेंगे? नहीं, जो आपके इसमें सिलेबस में मेंशन्ड है उसी रिपोर्ट का पूछ रहा है आपसे, तो ये तो आपको वैसे भी पढ़ना था, ऐसे भी पढ़ना था। इट इज नॉट कहीं से भी पूछ लिया। समझ आई बात? These are the two questions on this topic. Imagine two questions in mains on this small topic of social justice and empowerment in a single year. This is the importance of poverty as a topic in your general studies. You write the heading vicious cycle of poverty, vicious cycle of poverty. Vicious cycle of poverty. मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, लिखते लिखते ही आपको समझ आ जाएगा। Poverty is defined under two broad headings: growth and development. Growth and with respect to growth, अब ग्रो कैसे करोगे, निकलोगे कैसे? गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स डाल रहा है, इतने वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे रहा है,
स्टैट्यूटरी लॉज बना रहा है, फिर भी पॉवर्टी इज स्टिल देयर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. यू हैव लो इनकम, ठीक है. लो इनकम मीन्स आपका सारा पैसा जाता है हैंड टू माउथ, खाने पीने और कपड़े में. यू हैव लो सेविंग. व्हेन यू हैव लो सेविंग, ये एक इंसान की बात नहीं हो रही, कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी. ये इफेक्ट पड़ता है फिर पूरी कंट्री में. व्हेन यू हैव लो इनकम, यू हैव लो सेविंग. एंड इफ यू हैव लो सेविंग, वेयर यू विल इन्वेस्ट? Nowhere. The investment opportunities is less. And if you are not investing, the economic growth is not there. If you are not investing in a startup, if you are not investing in buying land, purchasing land, बेचना, खरीदना, if you are not investing in a local shop, आपको shop डालनी, कुछ भी करना है आपको अपनी growth के लिए, you have no funds to do it. ठीक है? Then there is low economic growth, and this leads to low income. This leads to low saving, low investment, low vicious cycle of low growth. ठीक है? फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एंटर करती है और बोलती है we will provide loans, invest, startups, everything. मगर हमने पहले ही देखा poverty is not only the lowness of income. You will be still trapped in this due to your social exclusion, due to your political exclusion, your cultural exclusion. ठीक है? पैसा आएगा और कुछ नहीं आएगा. अदर मैनिफेस्टेशंस में आप वहां पे लैक करोगे. वो भी तब पैसा आएगा when you will amicably do things with that loan जो आपने लिया. जब आपको बिजनेस अच्छे से सेट होगा, वो आगे जाएगा, then you can go out of this thing. ठीक है? This is with respect to growth. ये वाला एक साइड वाला बनाओ पहले. You make it. This is the vicious cycle of poverty. Why people, despite government efforts, despite constitutional provisions, despite welfare measures, remain in poverty? This can be your another main question, a very important question. समझा रहा है? Another dimension to see poverty. Why, despite all the efforts by government or social organizations like NGOs, ठीक है? इतना effort करने के बाद, why people are still under poverty? Because they have been trapped under the vicious cycle of poverty with respect to their growth and development. You बनाओगे, इसके बाद मैं इसको थोड़ा और explain करूँगा.
None. You have low income. Low income will lead to low saving. Low savings will lead to low investment. Low investment to low economic growth, and you are still trapped in low income. आओ जाओ डेवलपमेंट के साइड से. अब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, आप अपनी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालते हैं इस पॉवर्टी के साइकिल से. लेकिन कुछ यहाँ पे है. लो इनकम विल लीड टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. पहली की बात समझ रही है बात. लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. This will reduce the human capital. You are an adult, male or female, but you are not productive because you are not educated. Even if you are educated, you are an adult, but you are facing some health issues that were caused due to your poverty. वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे. And this low level of human capital will give low productivity. कहाँ की productivity होगी? अगर बिजनेस भी करेगा वहां भी फेल. अनपढ़ कुछ नहीं कर सकता, वो बिजनेस भी नहीं कर सकता, दुकान भी नहीं चला सकता. उसको ये नहीं पता होगा कि मैंने क्रेडिट किसको दिया, कैसे लिखना है, कब क्या करना है. लो प्रोडक्टिविटी. छोटे से बिजनेस में भी, किसी जॉब में भी लो प्रोडक्टिविटी. लो प्रोडक्टिविटी रिजल्ट लो इनकम. चलता है. Are you getting my point? Low income, low education and healthcare, low human capital, low productivity, low income. Low income, low saving, low investment, low economic growth, low income. Trapped in this cycle are poor. There is a very important phrase. Keep this phrase in mind. और मैं तुम्हें बताऊंगा गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रहता है. एक तो ये दो चीजें हैं. This is a very important phrase. Poverty is expensive. Once you are poor, everything is expensive. How? I am a rich person, or I am a middle class person, upper middle class person. ठीक है? When I will go to buy my groceries, मैं लाऊंगा तेल. Common day-to-day life के example है. मैं लाऊंगा तेल, oil. कुकिंग ऑयल. मैं ला रहा हूं कुकिंग ऑयल 15 kgs का, वो बड़ा वाला, क्योंकि आई हैव मनी. समझा रही बात. वो मुझे पड़ रहा है 3000 का, फॉर एग्जाम्पल 3000 का. ठीक है. गरीब है, ये क्या करेगा? 1 kg लाएगा, 1 kg की बोतल. हैंड टू माउथ है. समझो इस बात को. 1 kg of bottle costs, for example, 280 rupees. right? 10 kg का कितना हो गया? 2800. मैंने 15 kg 3000 में लाए. ये 15 kg मुझसे ज्यादा लाएगा, 3400 अप्रोक्सीमेटली, या 3500. समझ आ रही है बात. ये 15 kg इस गरीब को जिसके पास कुछ नहीं है 3500 का पड़ रहा है. मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा है, मुझे ये 15 kg 3000 का पड़ रहा है. गरीब गरीब रहता है. पॉवर्टी इज एक्सपेंसिव. बात आ रही है समझ. दूसरी चीज ये हुई, पहली चीज. दूसरी चीज, लोन, क्रेडिट, उस पे इंटरेस्ट फॉर दिस पुअर इज वेरी हाई. क्यों? Because the risk factor involved is high. पहले तो लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि क्या पता आप चुका पाओगे वापस पैसा या नहीं. Because you are poor. अब अगर दिल बहुत बड़ा है, दे दिया, I will charge more interest. Why? Because I am dealing with high risk factor. वहां पे भी एक्सपेंसिव, आपको आपकी गरीबी ही महंगी पड़ेगी. बात समझ आ रही है? हो गई दो चीजें. इनको हम लिखेंगे, इसको याद रखो. पॉवर्टी इज एक्सपेंसिव. कैसे? प्रेग्नेंट वुमन, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग एडुकेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी.
it will result to, in certain cases, brain damage or underdeveloped child. underdeveloped child or brain damage. ये तो माँ के पेट से ही पहले ही इसका ब्रेन जो है उसकी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो गई। अब कहाँ की डेवलपमेंट होगी? इस वाले इंसान के अंदर। अब अगर कोई इस फेज में नहीं आएगा, अब ही इज हेल्दी, बच्चा जब पैदा होगा ही इज हेल्दी, फॉर एग्जाम्पल कोई पुअर फैमिली, ही इज हेल्दी, देन बच्चे को बड़ा होने तक यू नीड टू प्रोवाइड हिम एडुकेट न्यूट्रिएंट्स, एडुकेट रिसोर्सेज। अगर आपको वो प्रोवाइड नहीं हुए तो आपका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होगा, ही वोंट अंडरस्टैंड थिंग्स। इसको यूपीएससी पहाड़ लगेगा, इसको कोई बिजनेस पहाड़ लगेगा, कोई सिंपल एजुकेशन 10th पास करना 12th पास करना भी पहाड़ लगेगा, क्योंकि इसके प्रॉब्लम इसके ब्रेन में ही हुई है। क्योंकि ये जब बढ़ रहा था, हिज ब्रेन और हर ब्रेन वाज इवॉल्विंग, उसको वो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले और ये डेवलप इसका ब्रेन नहीं हुआ, तो ये ही इज नॉट अ बेटर ह्यूमन कैपिटल, ही विल रिजल्ट इनटू लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम विल परसिस्ट। गरीब का गरीब ही रहेगा। समझ आ रही है बातें? यू राइट। विशियस साइकिल थ्योरी ऑफ पॉवर्टी, vicious cycle theory of poverty, vicious cycle theory of poverty argues that the various circumstances of the poor, combine, एकजुट आते हैं बहुत सारे circumstances इसी गरीब के, combine to maintain them in poverty, read what you are writing, ठीक है? यहीं पे रिवाइज करो इसको लिखते लिखते ही। Vicious cycle theory of poverty argues that the various circumstances of the poor combine to maintain them in poverty. Full stop. The poor are trapped in the situation with little chance of escaping. The poor are trapped in the situation with little chance of escaping. Again. Next line. Following factors also contribute to keep the poor trapped in poverty. एक तो ये हमने उसके देखे ग्रोथ और डेवलपमेंट, और भी इसको सप्लीमेंट करते हैं ये वाले फैक्टर्स। नंबर वन, पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन हिंडर फ्यूटल FOETAL जो पेट में बच्चा होता है, फ्यूटल ब्रेन डेवलपमेंट, कैन हिंडर फ्यूटल ब्रेन डेवलपमेंट and increase the possibility of premature birth. ठीक है? Full stop. Protein deficiency during early childhood can retard brain development. These are scientifically proven facts. ठीक है? Can retard brain development. Which can hinder progress at school and work. अब क्या करेगा बेचारा? Which can hinder progress at school and work.
समझ आ गई बात? नेक्स्ट, ओवरक्राउडेड एंड अनसैनिटरी कंडीशंस। ओवरक्राउडेड एंड अनसैनिटरी कंडीशंस मतलब हाइजीनिक कंडीशंस नहीं, overcrowded and unsanitary conditions in which poor live, constitute a health hazard, है कि नहीं है? constitute a health hazard। अब इनमें इम्यूनिटी होती, जब न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचा, इनमें इम्यूनिटी ही नहीं है। देखो ये पुअर को ट्रैप ही होता जा रहा है इस साइकिल में, ठीक है? पुअर लिविंग कंडीशंस, हेल्थ हजार्ड, अब बीमारी उठेगी। अब इसके लिए फाइट करता है इसका इम्यून सिस्टम, इसकी न्यूट्रिशन ही नहीं है एज कंपेयर टू रिच, ये ज्यादा बीमार यही होगा क्योंकि इसकी बॉडी में वो इम्यून सिस्टम उतना फंक्शनल नहीं है, क्योंकि इसने वो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं ली होती है। ये ज्यादा फंसता ही जा रहा है इन पॉवर्टी में, ठीक है? यू राइट? Constitute a health hazard and reinforces the danger to health caused by inadequate diet, Third point, poverty is expensive, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, poverty is expensive, हाइफन करके लिखो, poor pays more, नंबर 1 पॉइंट इसमें, poor tends to buy smaller quantity, है कि नहीं? Poor tends to buy smaller quantity and this raises the price per unit of goods. दो तरीके से इसको ये महंगा पड़ेगा, एक तो बल्क में, मैं अमीर हूं मैंने लिया, कोई गरीब है उसने लिया, पहले तो वैसे ही अगर कैलकुलेट करेंगे ये इसको महंगा पड़ेगा, ठीक है? और मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है किनकी? पुअर लोगों की, ठीक है? पुअर लोगों की, मेजॉरिटी इज ऑफ पुअर। तो ये सब 1-1 केजी की डिमांड करेंगे तेल के उस दुकानदार से। इट मींस द डिमांड ऑफ 1 kg or 2 kg bottle of oil will increase, not 15 kg. And if the demand of 1 kg or 2 kg oil bottle is increasing, cost will increase. 15 किलो का वहीं पे रहेगा, लेकिन इसमें 10-10, 5-5 रुपए, 20 रुपए बढ़ जाएंगे क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। दोनों तरीके से ये फंस जाता है। 1-1 केजी लेने से अगर वैसे कंपेयर करेंगे, वैसे भी फंस गया, ही इज पेइंग मोर देन मी, ही इज इंक्रीजिंग द डिमांड पर यूनिट, फिर इसके इंडिविजुअल इस गुड पे भी प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है? ये गरीब ज्यादा पे करता है, ये रिमेन्स पुअर। सेकंड, इसी में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द क्रेडिट, क्यों? लिसन, high rate of interest is charged on the credit due to high risk of default, ठीक है? due to high risk of default। अब ये पुअर है, सुनो, he is poor, he has low income, vicious cycle याद करो, he has low level of education and healthcare, he is of low level human capital, कहीं प्रोडक्टिविटी बड़े काम में यूज नहीं होगा, ठीक है? he has low productivity, लेकिन इसको कुछ लाइफ में करना है ना, घर पे तो नहीं बैठा रहेगा, then he will join the workforce in unhygienic and low income jobs, और उसकी वजह से यही बंदा बीमार पड़ेगा। फिर से एक तो इसी की इम्यूनिटी कम और इसी को यही काम करना और इसी को उन्हीं पैसों से वो चीजें खरीदना जो इसको महंगी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कांसेप्ट हियर, मैनुअल स्कैवेंजिंग।
मैनुअल स्कैवेंजिंग. मैनुअल मीन्स खुद साफ करना, द डर्टी फिल्थी ड्रेन्स पॉट होल्स, उसमें खुद इंसान नीचे उतरता है अंदर एंड वहां से उसको रिमूव करता है जहां पे फंसा होगा. मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है. लो ह्यूमन कैपिटल, लो प्रोडक्टिविटी, दे आर फोर्स्ड टू डू दिस जॉब. इवन इफ अ पर्सन हैज हाईएस्ट इम्यूनिटी, फिर भी वो इस ट्रैप में फंस के बीमार पड़ जाएगा. इनकी तो बात ही नहीं. फिर ये बंदा फिर से बीमार, फिर ये हॉस्पिटल जाएगा, फिर ये कमा नहीं पाएगा, वहां से इनकम कम, हॉस्पिटल में पैसे देने हैं. समझ आ रही है बात कि कहां कहां ट्रैप हो रहा है गरीब. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is focusing on these points as well. When we will see the efforts of government of India, beautiful efforts. ठीक है. दे दिया यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम, योर गोल्डन कार्ड, अप टू 5 लाख रुपीज फ्री. अब क्या करेगा स्टेट? ठीक है. चलो आप बीमार पड़ गए किसी भी काम से, नॉट दिस, ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, इसको कैसे बंद किया. मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ क्राइम. ठीक है. आपको दे दिया गया आयुष्मान भारत, आपको फूड रिक्वायरमेंट अच्छी नहीं है, यू आर सफरिंग फ्रॉम हंगर बिकॉज ऑफ दिस पुअर लो इनकम. ठीक है. एजुकेशन हेल्थ केयर आपके पास नहीं है, लो इनकम है, हंगर भी आपको इसके बाद सताएगी. वी विल प्रोवाइड यू मिड डे मील, नॉट ओनली फूड, वी विल प्रोवाइड यू दोज फूड विच आर न्यूट्रिएंट रिच. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फ्री इम्यूनाइजेशन पोर्टल लेवल पे. प्रेगनेंसी जो बच्चा होगा वो कार्ड निकलता है, गवर्नमेंट कार्ड, उसको वो सारे करने पड़ते हैं. फ्री पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप, गवर्नमेंट इज डूइंग. ठीक है. ऐसे ही गवर्नमेंट स्टडी करता है इस सब चीज को, कहां कहां पे प्रॉब्लम है, फिर वहां वहां पे एक पॉलिसी बना के, एक लॉ बना के, एक स्कीम बना के आपको दे देता है. ठीक है. ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग. यू राइट. Third, poor tends to do high risk jobs. Poor tends to do high risk jobs. Poor tends to do high risk jobs, which makes them vulnerable to health hazards. Which makes them vulnerable to health hazards. Which makes them vulnerable to health hazards. And they pay more. And they pay more to healthcare, and they pay more to healthcare than non-poor. फंसा है फिर से पॉवर्टी के साइकिल में ही. and they pay more than non-poor. समझ आ रही है बात? ये निकल ही नहीं पा रहा है इससे, मेहनत करके, मशक्कत करके, दिन रात मजदूरी करके, पैसे जमा करके, लेकिन निकल नहीं पा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन. This is how various circumstances in the life of poor, this is how various circumstances in the life of poor combine to maintain poverty. This is how various circumstances in the life of poor combine to maintain poverty. ठीक है. आज के लिए इतना ही. एनी क्वेश्चन? This is one of the most important topics for which we are going through. कल इसका